सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे आजकल एक हैशटैग ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, दैट्स हैशटैग BGDC। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि what else we could expect when two headstrong women of the industry are leading the team, the gang of girls that we have with us. Yes, you guessed it right. It's hashtag Big Girls Don't Cry. So we have with us, they need no introduction, Pooja Bhatt, Nitya Mehra. Along with that, the cast of Big Girls Don't Cry. एक-एक करके सबके कैरेक्टर्स नहीं मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके कैरेक्टर नेम से लोग आपको ज्यादा जानने वाले हैं, राइट? तो लेट मी गेस। पहले तो सबसे पहले हमारी प्लगी, ठीक है? रूही, करेक्ट? लूडो, करेक्ट? नूर, very beautiful. We have JC, we have Kavya, and we have none other than Diya, correct? So, मैं तो चाहूंगी हम गाने से ही शुरू करें। आप बहुत देर से कह रहे हो कि बैकग्राउंड में म्यूजिक होना चाहिए। So, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आया, मुझे इनफैक्ट पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी। आई एम नॉट हियर टू गिव स्पॉयलर्स, बट मैं क्या करूं, रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। थोड़े बहुत तो देने ही पड़ जाएंगे ना। बट देन विल स्टार्ट विद अ सॉन्ग, है ना? द टाइटल ट्रैक। लेट्स रोल। Who's singing? Let's roll. Who'll start? Come on, girls. Who was singing? खुद से नजर मिला जरा। माइक देना पड़ेगा ना, और हाँ लग रहा है। Pooja, we wanted to hear your voice also. मेरी जान, अगर मैं गाना गा सकती थी फिर मैं दुनिया चलाती थी। आप कुछ भी कर सकती हैं। You have inspired us in so many ways, you know. If I could sing, I would rule the world. But मैं lip sync कर सकती हूँ। वैसे मैं बता दूं आपको, न्यू नारायण शंकर in the town after almost 23.5 years, नहीं? Am I right? 23 yeah, I think so. Almost. हाँ, अभी 24 साल हुआ नहीं है ना, 6 महीने में क्या कुछ हो जाए पता नहीं मुझे भी। So इसलिए तो गुरुकुल के 3 स्तंभ रहे हैं, हमें पता ही है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन वो 23 साल पुराने हो गए हैं। अभी वीवी के नए स्तंभ होंगे ना, तो वो कौन से थे जब आप बना रही थी, और उसके बाद कुछ चेंजेस भी हुए क्या? एक ही है। क्या है? आत्मनम विद्धि। अरे बाप रे। Which means know thyself. Oh wow. Which means know yourself. Wow. If you know yourself, all else will just fall in place. Who are you? That's right. You know that that's better. Otherwise, world will tell you. है ना? Yes, What's your take? absolutely. हाँ, Pooja. No, but that's in fact that's what I added, is that if you don't know who you are, the world will tell you. But who are you is that's the whole idea. is कि ये सारे जो लड़कियां स्कूल में आते हैं, वो अपने आप को खुद पहले जान ले। They discover what they're all about, their metal, और फिर बाहर जाके दुनिया में कुछ कर पाएंगे। अगर वो अपने आप को जाने ही नहीं, तो what are they going to contribute to the world? And I think that applies to all of us across board, चाहे आप 15 साल की हो या आप 75 years old की हो। No, and I think the question is pertinent as you keep growing. True. You constantly have to keep digging into that. Who are you? And you have Because to I'll redefine. help you make Yeah. decisions. Just remember, in something, just think about it, and it'll probably make you, inshallah, help you make the right decision. Definitely. और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनके सबके लेयर्स मैंने उसमें देखे अलग-अलग। मैं एक-एक करके बात तो करूंगी। Starting with you, the पंजाबी कुड़ी। वैसे तो ये भी पंजाब से ही है। नित्या, you are also from अमृतसर ना? Amritsar. हाँ, both अमृतसर। We found each other. It was meant to be. वही पहले मैं नित्या से ही पूछना चाहती थी कि इतनी अच्छी टैलेंटेड कास्ट कहाँ से मिल गई आपको? मतलब एकदम आपने खोद निकाला इनको? नहीं, willpower to wait, to not just see other things and pick up those people. Really good casting directors, and my showrunner Sudhanshu and me, we spend a lot of time, thousands of auditions. Romil and Shivam were our casting directors, and obsessively, it's the only time I've obsessively even gone to Instagram, that कुड़ी नहीं मिल रही है, कित्थों लाए, and one by one, because also I think it's also because we were very clear who our characters are, and I was really hoping that we could just get the right fit, you know, and I think that's something I'm very proud of, that we as creators have managed to pull off. Starting with you, the other Punjabi girl. वैसे मैं भी हूँ, तो हैट्रिक हो गया हमारा, है ना? So you have always been like a जोड़ी मेकर और जोड़ी ब्रेकर भी, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ। जोड़ी मेकर तो जोड़ी तोड़वाइयाँ भी बहुत नहीं, but like I think that comes naturally everybody, right? कि मतलब आप बात करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कि अच्छा कैसा चल रहा है, it's like you need to break up with this guy, like he is not, yes, just dump him, just break up with him immediately. But no,
I've made a जोड़ी actually और उनकी अब engagement हो चुकी है. Oh wow. तो maybe मुझे एक matchmaking business शुरू कर लेना चाहिए. इसके अलावा alternate. इसके अलावा अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा. हाँ. किसी के तो मैं इंस्टा प्रोफाइल पे देख रही थी passion or nothing. अक्षिता I think है ना? हाँ अच्छा. So is this your passion only? I mean, I have quite a few passions, but acting is now becoming one of them, I would say. Top priority. Yeah. And we could see that when we see your character. So sweet. Such a complex character, but you played it with so much of ease. तो कितने auditions दिए थे या फिर ऐसे ही मतलब देखते ही select हो गई थी आप? Count ही रहता ही नहीं है, पता नहीं कितने अब तो I can't even count. I think easily like 8-9 rounds we would have done. Yeah, then we met in 8-9 Delhi. rounds. 3-4 महीने तक ये तो चला पूरा corporate job में नहीं होता. बताओ. पर ऐसी लड़कियां ऐसे थोड़ी ना मिलेंगी. True that. सच में हम सही छुप बोला. के बैठे थे हम. And corporate jobs are not forever. है ना? हाँ. और boring भी होते हैं ना बहुत. बोरिंग पता नहीं मगर it's not forever. हाँ. थोड़े टाइम में ऐसा मन करता है वहाँ कुछ पे change leaping कर frogs होता है ना, यहाँ पे एक बार आप कैमरा के सामने आगे छप गया मतलब जिंदगी भर है. Correct. हाँ. Exactly. True that. Coming to you, Ludo. You like playing Ludo only or basketball और किसी और तरह के sports में भी रहती थी आप? सच बोल दो जल्दी confession time. I lied once and said that I was like a really great basketball player in order to get this part, but ये I झूठ will मैंने not. कई बार बोला I बचपन will में. not do it again. I will be shamed for doing it again. So I don't know. I've never identified myself as like a big athlete. I've decided arts are where I succeed. But you know, I grew up playing badminton. I grew up running around. I grew up doing dance, which I consider a sport. No matter what the public consensus is, I guess I do identify as an athlete in that capacity. And but dance she's makes you not. feel younger. अगर आप कितना भी age कर जाओ तभी भी young लगता yes. है. But she lied. I'm saying she's not an athlete. She lied and she. अच्छा she lied to you also. Yes. वही बात है कि झूठ बोला इन्होंने कि हाँ मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ. सेट पे आके इनको समझ में आ गया कि बास्केटबॉल कैसे? प्लेयर कहाँ पे, but she did it with such इलाज. और बात तो वही है ना कि I mean, eventually when you कैमरे के can't सामने dribble झूठी a तो बोलना ball, पड़ता है with sincerity. कितना अच्छे से effortlessly. बिल्कुल तो she was, I think that was the first. Karan had to teach me how to dribble a ball, and I think Oh. everyone was like, "Oh." You played it in so much ease on screen, no? Exactly, because Karan was shooting all the basketball scenes, and he said, "You told me she knows how to play basketball. Now I'm not being able to shoot." I said, "Listen, she looks tall. She's an athletic body. She's got, yeah. Now just film will do its magic." स्क्रीन पे मरने के लिए मरने का एक्सपीरियंस थोड़ी ना चाहिए. So you have to try acting ना, so she pulled it off. बिल्कुल सही बोला. That's देखो, it. है ना? इतने सारे ट्रिक्स एंड ट्रेड तो आपको पूजा से ही मिल जाते होंगे मुझको लगता है ना? हाँ, ये सब लिख रहे हैं रोज. है ना? क्या बात है? I know. जो भी मुझे बोला पता है है. पूरा सारा notes. काश मैं भी कुछ झूठ बोलना सीख जाती अपनी लाइफ में. नहीं, that's what I like about you. That's what I like about It would have you. been very profitable. Oh. So I've learned from her कि देखो just with confidence say of course I know how to play No, basketball. because I'll come here and I'll learn. I will learn it, and obviously people will not have confidence. I will spend the hours and I will learn it. I can She take got up the delayed, challenge. so she couldn't even do rehearsal. Earlier shoot got delayed, so when she came, she hadn't done her basketball practice. But we'll be fine once you watch the show. Do you think it was possible, my performance as a अरे basketball definitely, player? definitely. I mean, though you're not going to say it wasn't possible. नहीं, मुझे नहीं लगा कि तुमको बास्केटबॉल नहीं आता था. Seriously. मतलब she was looking like कि उसको तो जन्मों से आता है बास्केटबॉल. कौन थे ट्रेनर मुझे भी बता दो. कौन थे ट्रेनर? उनके चरण छू लिए जाए. हाँ. I think Karan had a lot to do with it. हाँ. है ना, दिन रात एक करना पड़ा. वैसे पूजा, if I ask you, कभी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला? बचपन में तो बोला ही होगा. कौन सा झूठ था जो आपने बोला था बचपन में, बता दो. देखो मैं बहुत झूठ बोलती हूँ. जब भी सामने वाले को सच से तकलीफ होगी ना तो कभी तब झूठ बोलना पड़ता है. That's for और good. सच अगर आप एक औजार की तरह इस्तेमाल करें सामने वाले को ठोस पहुंचाने के लिए तो फिर वो झूठ से भी वाहियात होता है. तो आई बिलीव दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल half truth sometimes. It's important to lie blatantly sometimes. अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं True. you know hurt करेंगे. But otherwise अपनी खुद की जिंदगी के बारे में मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी कि झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है वो मुझे जानते हैं. And I think they have brought me into this world. Absolutely. So I don't need a license from anybody else. I'm not looking for approval. Absolutely. तो I think वो approval seeking energy जो मेरी थी youth में वो चली गई है. तो ये बहुत दबी हुई ख्वाहिशें थी या दबे हुए ऐसी चीजें होती है ना, कई बार जब आप गर्ल्स स्कूल में होते हो तो बहुत सारी चीजों में हम कई बार या तो खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि एक स्टेप बैक हो गया,
बट देन जो हम कहना चाहते हैं कई बार या करना चाहते हैं तो हमको रोक दिया जाता है, तो वो सारा इन सबके तौर पे आ गया। अगर मैं कनेक्ट करने की बात करूँ तो इनमें से आप कौन है इन सब कैरेक्टर्स में से? I used to play basketball. Oh wow. I was the captain. हाँ I was never a princess, but I was soft like her. हाँ, she's so soft. And I had a few desires like Yeah. her. Oh my god. And I was a very good, but I was also a very, very, I have to say, I used to be quite earnest. Came from from Amritsar. Yeah, I wanted to be this, Okay. like, but it wasn't in me. I was too straight-lined. Wanted the rebel bit. So I think there's a part of all of the writers and me in everybody. Very nice. And that's from all the shared experiences we've had. And also, I think what we did first is literally thematically, who are you? That's the theme. First thing we did was we wrote down 7 goals. There were 8 girls, I remember. Okay. But we wrote down 7 girls and who we wanted them to be. You know, like what are they, because it's about identity. So what kind of struggle is each of the girls going through? So once that was clear, then we infused it with all our life experiences and yeah. And so beautifully you've put all together each and every character, I must say. Thank you. Such a beautiful series. Thank you. Kavya, talking about you, तुम तो पूरी हिंदी फिल्म हीरो हो डूड, है ना? मतलब एकदम वो पता नहीं है कि कहाँ से क्या आने वाला है, छुपी रुस्तम टाइप होती है ना, वैसे वाली है. So how was it working with like Nitya ma'am, Pooja, and when you got this character, how was your journey be like? सबसे पहले कहना चाहूँगी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टक 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 टक. और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ. ऑल द डायरेक्टर्स आर वेरी अमेजिंग एंड मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है लाइक शुरू से शो के बारे में कि ये बहुत दिल से लिखा गया है. मतलब ये बहुत प्योर इंटेंशन से एंड नॉट जस्ट द इंटेंशन बट द प्रोसेस एंड अभी तक है ना, मतलब इसकी प्योरिटी और वो मेंटेन करी गई है. सो आई मीन आई लव्ड प्लेइंग काव्या. कुछ ऑडिशंस आप ऐसे देते हो जिनको देने के बाद आपको ऐसा लगता है फुलफिल्ड, यू नो, ऐसे आप बैठते हो सोफे पे और आपको ऐसा लगता है कुछ हुआ है आज. आफ्टर गिविंग काव्या's फर्स्ट ऑडिशन मुझे वैसे ही लगा था. अरे वाह. हाँ, इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इट वाज, इफ व्हेन यू सी द सीन, इट वाज अ सीन विद माय मॉम एंड वो देने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मतलब आई कुड टच द कैरेक्टर. कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा नहीं पता था कैरेक्टर के बारे में बट कुछ कनेक्ट हुआ था एंड आई थिंक इट वाज wonderful. Playing Kavya was wonderful. It was a whole ride and I love how beautifully it has been written and कितना authentically और इतना vulnerability के साथ वो सब कुछ दिखाती है कि मैं दुनिया के लिए ये हूँ लेकिन मैं असली में ये हूँ. मैं बनना ये चाहती हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है. So I think बहुत ही humanness, बहुत ही प्यार के साथ ये कैरेक्टर लिखा गया है और मेरे को मतलब amazing ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत ही प्यार से हर सीन डायरेक्ट किया है एंड वो फ्रीडम दी है कि मैं अपनी ओपिनियन रख पाऊँ कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है. सो आई हैड दैट ऑप्शन एंड दैट स्पेस टू ऑलवेज हैव दैट कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन. सो इट हैज़ बीन वंडरफुल एंड नोइंग कि आई एम ऑलवेज सपोर्टेड, यू नो, माई चॉइसेस आर सपोर्टेड एंड इवन इफ इट डजंट वर्क आउट आई एम स्टिल सपोर्टेड. सो वो बहुत बड़ी बात है, यू नो, ऐसे डूइंग अ बिग शो ऑन प्राइम and just having, you know, she's having your back at all times, not just in front of the camera but also behind the camera. So Absolutely. Coming to you, Pooja, जिस तरह से अभी काव्या ने भी बहुत खूबसूरती के साथ कहा, having a support or not having a support, having a bag or not having a bag, we have seen your journey. You being into the shoes of a producer at the age of 24, जहाँ पे सिर्फ हमारे मतलब लाइक अगर मैं एक्ट्रेसेस की बात करूँ तो सिर्फ they were sticking to the actor point of view या उसी में रहती थी स्टारडम में. आपने तमन्ना फिल्म प्रोड्यूस किया, एक अलग मैसेज दिया. आपने जख्म प्रोड्यूस किया, आपने पाप प्रोड्यूस किया, आपने बहुत सी फिल्मों को प्रोड्यूस किया और उसमें फीमेल कैरेक्टर्स को हमेशा आपने स्ट्रॉन्ग हेडेड रखा है बिल्कुल अपनी तरह. सो वो भी तब जब OTT नहीं था और OTT मुझे लगता है तब तक सोच भी नहीं पाया होगा कि इस तरह के कैरेक्टर भी होते हैं. हाँ, हुई थी एक फिल्म
के थ्रू हुई थी डैडी, Yes, और 1989. दूरदर्शन पे आई थी। Yes. उस जमाने में दूरदर्शन TV film. OTT था हमारे लिए, हाँ. देश के लिए। तो मेरी पैदाइश OTT के थ्रू ही हुई है, as they call it's an intimate medium. It was a television Yeah, film. तो I think उसके बाद में फिर तेरी कहानी भी हमने OTT के लिए या चैनल के लिए की थी। तो I think this is a very liberating medium. तो ये जो है ना कि नहीं बड़े पर्दे पे ही या थिएट्रिकल रिलीज ओनली, I think वो जो है वो completely outdated concepts है, क्योंकि ये अब रियलाइज करेंगे कि 14th मार्च को जब ये शो रिलीज होगी तो ये कैसे in a matter of hours will reach every corner of the world. 240 countries में रिलीज हो रही है। वो जो ट्रेडिशनल हमारे एक जमाने में हमारी जब फिल्म रिलीज होती थी जब तक वो प्रिंट यहाँ से वहाँ तक जब तक पहुँचती थी वो स्क्रीन्स भी उतने नहीं मिलते थे। So I think ये reach जो है is unbelievable. तो like I told them, I said the world is going to change, life is not going to be the same after 14th of March. That's very exciting, but बहुत ही डरावनी भी है, terrifying, but there is out there. उसके बाद फिर वो ये प्रोजेक्ट जो है, ये फिल्म जो है, ये ऑडियंस की बन जाती है, फिर उसके आपके ऊपर आप उसे क्लेम वापस रिक्लेम नहीं कर सकते। It's out there. People will make it theirs, they will attack it, they will love it, they will defend it, all of that. But I think that yes, हाँ, मैं 24 की उम्र में हिंदुस्तान की सबसे यंग फीमेल प्रोड्यूसर थी। उस जमाने में मुझे बोला गया कि एक्टिंग ही करो यार, स्टार हो। This is what you have to do. क्यों लात मार रही हो? लोग तो तरस जाते हैं कैमरा के सामने होने के लिए। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं who have used that approach to get there. Exactly. But here I was at the age of 24 saying I don't want to do this, I want to be behind the camera. मगर I think अगर मैंने वो नहीं किया होता, 21 साल का मैंने वनवास नहीं लिया होता, तो मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गैदर नहीं कर पाती। और वो लाइफ एक्सपीरियंसेस हार्नेस करके मेरे परफॉर्मेंसेस जो हैं, आई थिंक अगर ऑथेंटिक हैं आज, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। सो आई थिंक अलंकृता ने उसी लाइफ एक्सपीरियंसेस को हार्नेस किया था बॉम्बे बेगम्स में। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इवन नित्या एंड सुधांशु एंड करण हैव डन, क्योंकि आई थिंक के एक सेंस ऑफ जब भी आप यू कैन नॉट and you walk into a room and you command a certain space. True that. That comes with experience and life and falling and getting up and falling and getting up. जो aura की बात करते हैं ना, वो आप चांदनी चौक पे खरीद नहीं सकते दुकान से. It happens with a lot of falling down and getting a lot of bloody noses. And that comes with you. And that comes with time. That comes with time. But you got up and you said big girls don't. Big girls don't cry. That's what I said. तो आज भी जैसे नित्या कह रही थी कि I think last 3 दिन में आप कितने बार रोए हैं? 4 बार? 3 बार? बहुत. तो it's, I mean, it's okay to cry. It's absolutely essential to cry. But then I got up For this males, morning. females, and I'm Yeah. here. So my point is कि cry तो we will, but we can't just be reduced to tears. We have to get up and say, okay, now what? Now come You on. have to fight back. Absolutely. Yeah. नूर means beautiful. और आप तो अपनी टीचर्स की फेवरेट रही होंगी हमेशा से, मुझे लगता है, जैसे कि आप इसमें हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए इसका posture तो देखिए, है ना? बिल्कुल ऐसा एकदम। I was a lot like Noor in school. अच्छा। Yeah. So are you expecting कि आपको मिल जाएगा जब आपने ऑडिशन किया? ऑडिशन किया ना? मैंने ऑडिशन 2020 में किया था। अच्छा। तो तब से मुझे तो ये रोल चाहिए ही था। I was like, मुझे करना है, मुझे नूर तो प्ले करना ही है। एंड मैंने एज आई मेंशन, मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स को लॉकडाउन के टाइम पे कॉल किया था और मैंने पूछा था कुछ चल रहा है, जैसे दुनिया बंद हो गई है, बाद में कॉल करना। तो फिर कुछ नहीं हुआ, फिर से मैंने कुछ बंच ऑफ ऑडिशंस दिए एंड इट वर्कड आउट। It was a very laborious process. Yeah. Glad it worked out. और मैं अगर आपकी बात करती हूँ जेसी, तो आप जितनी देखने में इतनी इनोसेंट, इतनी सॉफ्ट है, वैसा ही आपका किरदार भी है ना? So how were you approached by Nitya to do this role, or how many times did you give the I audition? actually got sent the audition flyer, right? And then when I called the 2020, of course. yeah, the No, casting, this was now. no, this was like just Acha. 2023. 23. 22. Yeah. Okay, तो auditions इतने टाइम से चल रहे थे पहले से? No, there was one time where we had just initially started looking when the scripts were not even ready. That's the time we found. 2020. But we wanted somebody, actually, JC's character is from Nepal. And, you know, we were getting a lot of auditions from India. But I was like, why are we not going to Nepal? So we said, fine, because, you know, I mean, there's also costs and this and that. And then finally flyers got sent to Nepal. Oh. Okay. And But then, actually, I was late for that. और Yeah, अभी and से then मुझे I लगता है वो called. स्टारडम इनको अभी से मिल गया। फैन फॉलोइंग देखो आप लड़की की, है ना? exactly. No, I called them, right? And then they were like, auditions are over now. We're flying back tomorrow, 11 a.m. If you can come to our hotel, like before 11, just do it. I was like,
I set an When you alarm. reached before I was everybody. like, I have to go. And then I went to the terrace and I gave my audition, and then they were like, okay, they were with their suitcases, by the way. I swear, I'm not even like joking. They were literally with their, yeah. And I was like, I was at the terrace, and I was like, okay, fine, I go my audition. What am I supposed to do? And वो then I did passion that. और nothing वाला आपको भी लिख लेना चाहिए इसमें tagline. Now coming to you, Pluggy. कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे desires है. Boys, oh, ऐसे वाला है ना? No, I feel like I've said it pehle se also, you know, Pluggy is so much, she's like a little part of me where, you know, I feel like I was a lot like her in high school, but in my head. Oh, okay. So Pluggy jo hai, she's everything that I wish I could have expressed in that loud and out and proud Yes. way, but you're so shy and you have so many insecurities and sab andar band ho jata hai. So, you know, Pluggy is just like everything I wanted to be as a teenager and just express it and explore everything. ये जो बातें करते हैं इस एक्सपीरियंस के बारे में, सिस्टरहुड के बारे में बात. Yes. हाँ. नॉर्मली आपने तो सुना होगा वो रटा हुआ लाइन कि वी वर लाइक वन बिग फैमिली, एंड दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू. तो ये पहली प्रोजेक्ट में एक ऐसे बॉन्ड्स बनाना इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज आई रिमेंबर वेरी अनकंफर्टेबल मेमोरी ऑफ माइन जस्ट केम बैक टू मी फ्रॉम स्कूल. तब मैंने डिसाइड किया कि झूठ जो है ना सामने वाले को इनफैक्ट हेल्प करता है. बट हाँ, स्कूल में गर्ल्स बॉयज बच्चे बहुत विशेष हो सकते हैं और होते हैं. सो आई थिंक अगर आप वो झेल सकते हैं ना, लाइफ इज वेरी इजी आफ्टर दैट, वेरी इजी आफ्टर दैट. Absolutely. Thank you so much. Thank Being you. so honest on the show. Thank you for giving us a lot of energy through this interview. Thank you so much. Yeah, I'm thank you. so honored. And thank you so much all of you guys for watching us. 14 मार्च को आ रही है #BGDC Big Girls Don't Cry. You all say on the camera. Watch Big Girls Don't Cry. Watch Big Girls. Yes. Yes. Middle camera. 1, 2, 3, go. Watch Big Girls Don't Cry, 14th March. And watch this interview on Punjab Kesari Navodaya Times. यार हमको भी थोड़ा footage दे देना. Thank you so much for watching us. Bye bye and take care.